Good morning, students. Now the next structure of group 13 element is aluminum chloride, AlCl3. This is the structural representation of aluminum chloride. Explanation of aluminum chloride. Aluminum chloride, that is AlCl3, in which aluminum atom in aluminum chloride is sp2 hybridized. The aluminum atom in aluminum chloride is sp2 hybridized with one vacant unhybrid p orbital. It containing one vacant unhybrid p orbital, because of aluminum atom in aluminum chloride undergoes sp2 hybridization, and that's why it containing one vacant unhybrid p orbital. Aluminum chloride exists as the dimer. Aluminum chloride exists as dimer, that is Al2Cl3, and this dimer is formed by overlap of vacant 3d orbital of aluminum with a lone pair of electrons of chlorine atom. This dimer is formed by the overlap of vacant 3d orbital of aluminum with a lone pair of electrons of chlorine atom. Okay, and this is the structural representation of aluminum chloride. Okay, so Al2Cl6, it is a dimer of aluminum chloride. Okay, now next one, structure of orthoboric acid or boric acid. Explain the structure of orthoboric acid or boric acid having formula H3BO3. H3BO3. Orthoboric acid has central boron atom bound to 3 hydroxyl group. The central boron atom in orthoboric acid is bound to 3 hydroxyl group. Hydroxyl group means OH group. The solid orthoboric acid has layered crystal structure. Solid orthoboric acid has layered crystal structure in which trigonal planar B2H3 units. B2H3 means boron hydroxide. The solid orthoboric acid has layered crystal structure in which trigonal planar boron hydroxide units are joined together by hydrogen bonds. This BOH thrice units are joined together by hydrogen bonds. यहाँ पर दिखाया देखो hydrogen bonds, डॉट 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 जो बॉन्ड दिखाया है वो है hydrogen bond, and this is the structural representation of orthoboric acid or just boric acid. Okay, now next structure of group 13 element, that is boric acid, diboran. Next structure of group 13 element is diboran, B2H6. Structure and bonding of diboran यहाँ पर रिप्रेजेंट किया देखो, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरान B2H6. ओके, बनाना स्ट्रक्चर यहाँ पर राइट में दिया है और लेफ्ट में बॉन्डिंग दी है, ओवरलैपिंग कैसे होती है वो बॉन्डिंग दी है. ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन? The electronic configuration of boron is 1s2 2s2 2p1. Electronic configuration of boron is 1s2 2s2 2p1. So thus it has only 3 valence electrons. So electronic configuration क्या indicate कर रहा है? Boron containing 3 valence electrons, 1 in 2p orbital and 2 in 2s orbital. Okay, so boron containing 3 valence electrons. In diboran, each boron atom is sp3 hybridized. Diboran having molecular formula B2H6, it containing 2 boron atoms and 6 hydrogen atoms. So each boron atom in diboran is sp3 hybridized. So this sp3 hybridized orbital, what is sp3 hybridization? The process of mixing and recasting of 1s orbital and 3p orbitals to form tetrahedrally arranged 4 equivalent orbitals. इट इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं? 4. तो यहां पर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए. उस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और चौथा एम्प्टी होता है. आउट ऑफ दिस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स and 1 is empty. Empty means vacant. So in diboran, each boron atom is sp3 hybridized. 3 of such hybrid orbitals are half filled. Half filled means containing 1 electron. 3 of such hybrid orbitals are half filled, while fourth sp3 hybrid orbital remains vacant. 4 में से 3 हाफ फील्ड है और एक कैसा है? वैकेंट है, एम्प्टी है. तो अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसमें से ये 3 में से 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? हाइड्रोजन के साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होते हैं. तो देखो यहां पर द 2 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच बोरॉन एटम, दोनों बोरॉन में से sp3 के 3 हाफ फील्ड है, उसमें से 2 चले जाते हैं.
the two half-filled sp3 hybrid orbitals of each boron atom overlap with 1s orbitals of two terminal hydrogen atoms and form 4b-H covalent bond. This 4b-H covalent bonds are known as terminal bonds because of these four hydrogen atoms are terminal hydrogen, so that's why they produces terminal bonds. कितने terminal bond बन गए हैं? 4b-H terminal bonds are formed. These bonds are also known as two-centered two-electron bonds. These bonds are also known as two-centered two-electron bonds. दो सेंटर है, यहां पर दो बोरॉन है और दो बोरॉन के दो इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दीज बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, दैट इज 2C2E बॉन्ड्स. ओके, नाउ अभी हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बच गए? एक. हर बोरॉन के पास तीन थे ना हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हर बोरॉन के पास कितने थे? तीन में से हर बोरॉन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो गए, 4b-H कोवेलेंट बॉन्ड बन गए. तो अभी ईच बोरॉन एटम रिमेन्स हाउ मेनी sp3 हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल? 1. ओके, सो देयरफॉर when 1s orbital of each of the remaining two hydrogen atoms, डाइबोरैन में हाइड्रोजन कितने हैं? 6 में से 4 हाइड्रोजन बोरॉन के साथ ओवरलैप होने के बाद टर्मिनल बॉन्ड बन गए, 4 टर्मिनल बॉन्ड बन गए. अभी हाइड्रोजन कितने बच गए? 2. ओके, सो देयरफॉर व्हेन 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग टू हाइड्रोजन एटम्स साइमल्टेनियसली ओवरलैप विथ half filled hybrid orbital of boron atom and the vacant hybrid orbital of other boron atom. तो दो हाइड्रोजन बच गए, उसमें से एक हाइड्रोजन किसके साथ ओवरलैप होता है? बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है. द रिमेनिंग two hydrogen atoms overlaps with half-filled sp3 hybrid orbital of one boron atom and vacant sp3 hybrid orbital of other boron atom. It produces two bridge bond. Once again देखो ये पॉइंट डिफिकल्ट है. When 1s orbital of each of the remaining two hydrogen atoms simultaneously overlap with half-filled hybrid orbital of one boron atom and the vacant hybrid orbital of the other boron atom, it produces two 3 bonds, or these bonds are also known as banana bonds, and it is indicated as 3C2E. क्या कहा है? It produces two three centered कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 बॉन्ड बनते हैं. ब्रिज बॉन्ड कितने बन गए? 2. लेकिन ब्रिज बॉन्ड का नाम क्या है? 3 centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. After the overlapping of remaining half-filled sp3 hybrid orbital of one boron and vacant sp3 hybrid orbital of other boron with remaining two hydrogen atoms, it produces two bonds. Which two bonds? 3 centered 2 electron bonds. It produces 3 centered 2 electron bonds. These bonds are also known as banana bonds, and it is represented as 3C2E. Okay. Now, hydrogen atoms involved in 3C2E bonds. 3C2E बॉन्ड में जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स. Hydrogen atoms involved in 3C2E bonds are the bridge hydrogen atoms, and it is hydrogen atoms in which two hydrogen atoms in between boron, hydrogen and boron bond में जो हाइड्रोजन है उसे कहते हैं bridge hydrogen atoms. So therefore in diboron 2 boron atoms and 4 hydrogen atoms lie in one plane. टोटल डाइबोरैन में बोरॉन कितने हैं? 2 है. हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है. तो उस 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन और 2 बोरॉन एटम एक ही प्लेन में होते हैं. इन डाइबोरैन 2 boron atoms and 4 terminal hydrogen atoms. 4 terminal, this is important. In diboron, the 2 boron atoms and 4 terminal hydrogen atoms lie in one plane, while the 2 bridging hydrogen atoms, 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम बच गए. एक होता है प्लेन के ऊपर और दूसरा होता है प्लेन के नीचे. while the 2 bridging hydrogen atoms lie symmetrically
above and below this plane. Okay, so this is the very complicated structure of diboran. यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है डायबोरान का, वो स्ट्रक्चर देखो। पहला यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर दिया ऊपर उसे कहते हैं बनाना स्ट्रक्चर। ओके, और दिस इज बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरान। और यहाँ पर शेप दिया हुआ है, देखो प्लेन शेप दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन और 2 बोरॉन एक ही प्लेन में है, एक हाइड्रोजन ऊपर है और दूसरा हाइड्रोजन नीचे है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर of group 14 element, that is silicon, carbon, silicon, these are the elements of group 14. Okay, now compound of silicon, that is silicon dioxide. Structure of silicon dioxide. So silicon dioxide का structure आगे है. This is the structure of silicon dioxide, and in silicon dioxide each silicon atom is bonded to 4 oxygen atoms by single covalent bond. In silicon dioxide each silicon atom is bonded to 4 other oxygen atoms, 4 oxygen atoms, and each oxygen atom is bonded to 2 silicon atom. हर oxygen कितने silicon को जुड़ा है? 2. Okay, so now that's explanation of silicon dioxide. Silicon dioxide, SiO2, is commonly known as silica. Silicon dioxide is commonly known as silica. Quartz, cristobalite, and tridymite are different crystalline forms of silica. What are the different forms of silica? Quartz, cristobalite, and tridymites are different crystalline forms of silica. In SiO2, each silicon atom is covalently bonded in tetrahedral manner. In silicon dioxide, each silicon atom is covalently bound in tetrahedral manner to 4 oxygen atoms. The crystal contain 8-membered ring having alternate silicon and oxygen atom. This is the 8-membered. So ring containing how many membered? 8-membered. So this is the ring. Suppose कोई भी एक रिंग सिलेक्ट करो, उस रिंग में 4 सिलिकॉन है और 4 ऑक्सीजन है. सो ईच रिंग कंटेनिंग 8 atoms, so that's why it is known as 8-membered ring having alternate silicon and oxygen atom. Okay, so this is the representation of silicon dioxide. Now the next structure, that is nitric acid. Next structure of group 15 element, nitrogen is a element present in group 15. Nitrogen का compound पहला है nitric acid. So nitric acid is a strong oxidizing mineral acid. Nitric acid is a strong oxidizing mineral acid. The central nitrogen atom undergoes sp2 hybridization in nitric acid. In nitric acid, the central nitrogen atom undergoes sp2 hybridization, and nitric acid exhibits resonance structure, resonance phenomenon. It shows resonance structure. So this is the resonating structure, 3 structure of resonance. Resonance structure means the structure that represents the location of electrons in a molecule. The location of which electrons? The structure that represents the location of which electrons? Lone pair of electrons and pi bond electrons in a molecule. It is known as resonance structure. And the delocalization of lone pair of electrons and pi bond electrons, it is known as resonating structure or resonance hybrid. So nitric acid exhibits resonance hybrid structure. Okay, and this is the representation of nitric acid. Now next one is orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid or phosphoric acid, just phosphoric acid, H3PO4, phosphoric acid. Now structure of phosphoric acid or orthophosphoric acid. Phosphorus forms phosphorus acid. Phosphorus forms number of oxy acids. बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स बनाता है फॉस्फोरस. कौन कौन से देखो? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, orthophosphorus acid, pyrophosphorus acid, then hypophosphoric acid, orthophosphoric acid, pyrophosphoric acid, and polymetaphosphoric acid. These are the number of oxy acids of phosphorus are formed. So that's why phosphorus forms number of oxy acids. Orthophosphoric acid, that is H3PO4. H3PO4 is known as orthophosphoric acid. So orthophosphoric acid is a strong non-toxic mineral acid. Orthophosphoric acid is a strong non-toxic mineral acid. It contains 3 ionizable acidic hydrogen.
In this molecule, in this acid, on dissociation, it produces 3 hydrogen ions. So that's why orthophosphoric acid is a strong non-toxic mineral acid. It contains 3 ionizable acidic hydrogen. The central phosphorus atom is tetrahedral. Central phosphorus atom is tetrahedral. That is the structure. यहाँ पर दिया है देखो, try this, find out the structural formulae of various oxy acids of phosphorus. तो 7 ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस के. पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दूसरा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड. हाइपोफॉस्फोरस एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO2. दूसरा है पायरोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला है H4PO3. तीसरा है पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, दूसरा है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 और तीसरा है पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5. चौथा है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6. पांचवा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ये अभी अभी स्ट्रक्चर देखा वही है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. 6 नंबर है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 एंड लास्ट है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड. इट इज अ पॉलीमर H3PO3 n times. दिस इज लास्ट वन, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड. फिर से देखो ऑक्सी एसिड कितने हैं फॉस्फोरस के? 7 है. पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3PO2. दूसरा है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H3PO3. तीसरा है पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5. चौथा है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6. पांचवा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4. 6 नंबर पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 and last one polymetaphosporic acid that is HPO3 n times. ब्रैकेट में HPO3 लिखना है, ब्रैकेट के बाहर n, small n. Okay, so these are the oxy acids of various oxy acids of phosphorus. Now notable compounds of elements of group 13, 14 and 15. Various compounds of group 13, 14 and 15 elements. Now first compound, notable compound of boron is borax. Borax. The crystalline borax has formula. उसका फॉर्मूला क्या है देखो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब बोरेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2. डेकाहाइड्रेट है, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. The first compound, first notable compound of elements of group 13, that is borax. And the crystalline borax has formula Na2B4O7 10H2 or Na2 in bracket B4O5 OH4 times bracket complete 8H2. Okay. Now explanation. Borax occurs naturally as tin cal. Borax occurs naturally as tin cals which contains about 90% borax. Tin cals contains about 90% borax. Once again, borax occurs naturally as tin cals which contains about 90% borax. It is found in certain inlands lakes in India, Tibet and California. California means USA. Now, how is borax obtained from its mineral colemanite? Obtain the manufacture of borax from colemanite ore. How is borax obtained from its mineral colemanite? So यहाँ पर रिएक्शन दी है मिनरल कोलेमानाइट की, रिएक्शन यहाँ पर दी है. कोलेमानाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Ca2B6O11. Ca2B6O11. This is known as colemanite. So borax is obtained from its mineral colemanite by boiling it with a solution of sodium carbonate. When colemanite is boiled with a solution of sodium carbonate, it produces borax and sodium metaborate. Borax and sodium metaborate. Sodium metaborate means NaBO2. It is known as sodium metaborate along with calcium carbonate. So what is the reaction? Ca2B6O11 plus twice of Na2CO3. On heating it produces Na2B4O7 plus twice of NaBO2, that is sodium metaborate, and CaCO3, twice of CaCO3, that is calcium carbonate. Now some questions are there in properties.
Why is the aqueous solution of borax alkaline? Because of borax on hydrolysis. borax में पानी डालने के बाद solution alkaline क्यों दिखाता है? Because of on hydrolysis, borax on hydrolysis it produces strong base NaOH and weak acid H3BO3, boric acid. On hydrolysis, borax forms a strong base NaOH and a weak acid H3BO3. The presence of strong base makes the solution of borax alkaline. Due to the presence of strong base NaOH, the solution, aqueous solution of borax produces alkaline solution. Okay, so reaction क्या है देखो, Na2B4O7 plus 7H2O, it produces twice of NaOH plus 4 H3BO3. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया है NaOH और H3BO3, इनमें इसमें NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और H3BO3 वीक एसिड है. ओके, सो दैट इज द रीजन. What happens when borax is heated strongly? बोरेक्स को स्ट्रांगली हीट करने के बाद, बोरेक्स में वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. तो हीट करने के बाद वो 10 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है. सो बोरेक्स इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. बोरेक्स इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ऑन हीटिंग बोरेक्स लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स. On heating, borax loses water molecules. On further heating, borax swells up. फिर से देखो, borax is a white crystalline solid. On heating, borax loses water molecule and swells up. On further heating, it melts. उसे further heat करने के बाद वो melt हो जाता है and forms a transparent liquid. Borax on heating, it loses water molecules and swells up. On further heating, it melts and forms transparent liquid. On further heating, it melts and forms a transparent liquid which solidifies into a glass. मेल्ट हो जाता है फर्दर हीट करने के बाद और ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाता है और उसे सॉलिडिफाई, उसे कूल करने के बाद सॉलिडिफाइज हो जाता है उसका और ग्लास लाइक सब्सटेंस बन जाता है. बोरेक्स ऑन हीटिंग लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स and swells up. On further heating, it melts and forms a transparent liquid which solidifies into a glass-like material known as borax bead. Borax bead means Na2, NaBO2. NaBO2, that is known as borax bead. तो क्या है रिएक्शन देखो, Na2B4O7 plus dot 10H2O, Na2B4O7 10H2O. On heating, it loses 10 water molecules and it produces Na2B4O7. And Na2B4O7 on further heating, it produces a transparent liquid, and this transparent liquid on solidifies, it produces glass like material, and this glass like material, it is known as borax bead, having formula NaBO2. So Na2B4O7 on further heating, it produces borax bead, that is twice of NaBO2 plus B2O3. Okay, B2O3. Boron hydride, boron anhydride, anhydride of boron, that is B2O.